Hello everyone, I am Pratiksha and today we're going to understand the concept of economic development. Now, the reason that why I have chosen this topic is because I believe that this is one of the concepts that keeps on hitting the headlines of any newspaper. It is one of the concepts that always finds its way in any book of economics that we read. So not a concept that we are not familiar with. It's something that keeps on hitting the headlines or any book that we read, and not just limited to economics, but एक ऐसा process which is considered to be very fundamental to the growth of any economy. One of the concept that any economy wishes to achieve. So today we are going to deconstruct this whole process, deconstruct what lies in this process of economic development. Now, before I begin with, I would first like you all to know who I am. I am Pratiksha, just what I mentioned in the beginning of the video. I am currently doing my bachelor's with my major subjects in economics and political science from Shivaji College. I'm a final year student and my hobbies are that I love to speak in front of the public. I love teaching as well as reading books. So as I started this class with that, how, economic development as a concept is not something new. It's something that keeps on hitting any page of newspaper. आप कोई भी अखबार को पढ़ें, किसी भी economics की बुक को पढ़ें, आपको ये कॉन्सेप्ट हर जगह मिलेगा, राइट? हम बात करते हैं कि किस तरीके से एक इकोनॉमी को कोशिश करनी चाहिए दैट इट एम्स टू अचीव द पाथ ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हम अपने आप को डेवलप कर सकें, राइट? सो दिस इज व्हाई we need to understand कि ये प्रोसेस है क्या, इसके अंदर होता क्या है, और हम कब अपने आप को डेवलप कह सकते हैं, कौन से वो एरियाज हैं जब हम अपने आप पे काम करेंगे और एक कंट्री को हम इकोनॉमिकली डेवलप कहेंगे. सो दिस इज वन ऑफ द क्लिपिंग दैट टॉक्स अबाउट व्हाट is the path to development, and the other picture talks about the whole process of what development is all about. So we are trying to understand that what this holistic concept of economic development is all about. Right. So here is what we will begin with by introducing development to all of you. So development is a process which aims to improve the quality of all human lives as well as capacities by raising the standard of living, self-esteem, freedom. Right. So development की जब हम बात करते हैं तो development talks about improving the quality of life. जब जिस तरीके की जिंदगी हम जीते हैं, the life that we live, while when we are trying to uplift the same, while we are able to upgrade from where we used to live initially upon, that is the whole idea of development. Improving the quality of life, improving the capacity of an individual, क्षमता को increase करना. कल मैं जो कर सकती थी और आज मैं जो कर सकती हूँ, जो improvement आएगा, that is the idea of development. So development is not just limited to how the economy behaves with the growth that is have. इसका मतलब ये नहीं कि अगर कल इकोनॉमी में 7% ग्रोथ है और आज 10% ग्रोथ है तो हम इकोनॉमिकली डेवलप हैं और हम अपने आप को एक डेवलप्ड इकोनॉमी टर्म कर सकते हैं. इट्स नॉट दैट. डेवलपमेंट एक बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, एंड इस वजह से विल टॉक अबाउट लेटर कि कितना डिफिकल्ट है इस प्रोसेस को मेजर करना, बिकॉज ये हर एक एस्पेक्ट को टच करता है. एंड कौन से वो एस्पेक्ट हैं जिसको डेवलपमेंट टच करने की कोशिश करता है, वहां पे इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करता है. सो हियर आई हैव लिस्टेड 3 कोर आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट. फर्स्ट, sustenance. Sustenance is our ability to meet the basic needs of life. We often describe our basic needs to be food, shelter, clothing. So when we are developing, we develop in a way that we always, we are always able to fulfill the basic needs. We are able to sustain our life with whatever we desire and want, right? So development is about sustenance. It's about keeping on with the life, right? Whatever you desire to consume in your life, right? That is what development is all about. It wants to sustain you with the minimum needs that you wish to fulfill. Next,
सेल्फ एस्टीम, इट्स अबाउट डेवलपमेंट। हम तब बोलेंगे जब आप अपनी एक वर्थ इकोनॉमी में समझें, जब आप एज एन इंडिविजुअल जानते हैं दैट आप जो करेंगे इकोनॉमी में वो एक डिफरेंस लेके आएगा। सेल्फ एस्टीम को आप रियलाइज करें, आप अपनी रिस्पेक्ट को समझें। जब एक इंडिविजुअल डिग्निटी के साथ रहता है उसे हम डेवलपमेंट कहते हैं। जब वो अपनी सेल्फ वर्थ जानता है हम उसे डेवलपमेंट कहते हैं। सो इट इज अ वेरी ब्रॉड कॉन्सेप्ट, not just limited to economics, but also touching the human aspect, the humanitarian aspect that we often talk about. And finally, freedom. Development is all about freedom. It's about expanding the choice base. Today, when I walk into the market, I'm free to decide whatever product that I want to purchase. मैं कोई भी product अपनी choice का purchase कर सकती हूँ. There are n number of things that are available, and ये freedom है. There is no coercion, right? So development is about realizing the idea and value of freedom, right? So from servitude, we are able to choose. That is what development is. Next, now this is one of the concept that I really need to bring in, because we often confuse ourselves to growth. We when we talk about development, we understand that okay, GDP has to improve and then we develop. No, it's not like that. It works differently. ग्रोथ अलग है एंड डेवलपमेंट अलग है। जब हम इकोनॉमिक्स में ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, दैट इज ऑफन लिमिटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी बिहेवियर। सो व्हेन जीडीपी ऑफ अ कंट्री इंप्रूव्स, कल को अगर कंट्री की जीडीपी 8% थी एंड आज वो इंक्रीज होके 10%, 12% है, सो वी से दैट द ग्रोथ इज हैपनिंग। एंड व्हाट इज ग्रोथ? इकोनॉमी में ग्रोथ कैसे कैलकुलेट की जाती है? इट्स द टोटल प्रोडक्शन। अगर टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है तो ग्रोथ हो रही है। But as I earlier mentioned that how development is very wide, we are not able to, we are not just limiting ourselves to the total production. We are encompassing broader areas. We want that infrastructure improve हो, एजुकेशन सिस्टम कंट्री में इम्प्रूव हो, हेल्थ केयर सिस्टम ऐसा हो जो हर किसी की लाइफ को ध्यान में रखे। हम क्या ऐसी यूटिलिटीज क्रिएट कर पा रहे हैं, ऐसी सर्विसेज बना रहे हैं जो हर एक इंसान डिजायर करता है, right? So when we are able to touch all the corners of an economy, try to make, we try to make a difference in every sector, we try to improve the capacity, ये development है। So development is very broad, very holistic in nature, and growth as a whole becomes a part of development, right? So development is like a set, which is broad. एंड फाइनली ग्रोथ एक कॉन्सेप्ट ऐसा है जो अपने आप को लिमिट करता है विद ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स। ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स क्या होती है? ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स इज द इकोनॉमिक्स व्हिच टॉक्स अबाउट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन। पर जब हम डेवलपमेंट के बारे में बात कर सकते हैं, सो इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट। हम इकोनॉमिक्स को और भी ज्यादा रेलेवेंट बना रहे हैं विद व्हाट्स गोइंग ऑन अराउंड इन द इकोनॉमी टुडे। सो इट बिकम्स अ वेरी डायनामिक, अ वेरी मल्टीडिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट। मल्टीपल फैक्टर्स अफेक्ट डेवलपमेंट। Next, as I told you that when a concept is so broad, right? अपने आप में कॉन्सेप्ट अगर इतना बड़ा है तो उसको मेजर करने का तरीका भी उतना ही डिफिकल्ट होगा, बिकॉज इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट टॉक्स अबाउट द सेम। इट टॉक्स अबाउट दैट हाउ वी कैन मेजर हाउ एन इकोनॉमी इज बिहेविंग, इज इट डेवलपिंग और इज इट नॉट। So the economists have figured out their way. We have a number of index which would allows us to, say that whether a country is developing or not. One of the most important index over here is Human Development Index. Human Development Index, as the name suggests, human development. Human किस तरीके से डेवलप कर रहा है, क्या उसकी कैपेसिटी इंप्रूव हो रही है कि नहीं। नाउ हाउ वी कैन मेजर कि किस तरीके से कैपेसिटी इंप्रूव होगी? There are of course 3 ways that we always term that if these 3 areas are somewhere where an individual grows, then we say that the human is developing. First is education. If he or she is able to get quality education or not. Second, health. The healthcare sector, is he able to live an expected life, right? The longevity of life is good. And finally,
real per capita income, when we talk about the standard of living, अगर ये तीनों चीजें improve हो रही हैं, education, health, quality of life, then we talk that the human is developing, progress is being made, and that is what human development index is all about. It tries to gauge the improvement in education, health, as well as the standard of living of an individual. Second, gender related development index. Now this is very important. हो सकता है that एक country बहुत अच्छा grow कर रही है, it's having a growth of around 12% every year, but what about कि country का economic system ऐसा है जो male dominated है, जहाँ पे ज्यादातर male ही contribute कर रहे हैं. What about the females? But development broad है. Development चाहता है that females become the wealth creators. Females become the central and focal point of an economy, right? So gender development index talks about that how the females are becoming a greater, giving a greater share and contribution to the process of development, right? So when this improves, then we say that yes, the country as a whole is progressing. Poverty index, right? How the lowest rung of the society, how we are able to improve the quality of life of the lowest rung of the society. अगर poverty में improvement आ रहा है, गरीबी हम खत्म कर पा रहे हैं, गरीबी को मिटा पा रहे हैं, उनको हम इकोनॉमी का एक बहुत ही इंटेग्रल पार्ट बना के उनकी लाइफ इंप्रूव कर पा रहे हैं, तो जब इस इंडेक्स में इंप्रूवमेंट आता है, देन वी टॉक अबाउट कंट्री इज प्रोग्रेसिंग. And finally, we talk about increase in real per capita income. आपकी इनकम इस तरीके से इंक्रीज हो कि वो इन्फ्लेशन को ध्यान में रखे. ये नहीं कि आपकी अगर इनकम 5% से इंक्रीज हो रही है और इन्फ्लेशन भी 5% से इंक्रीज हो रहा है, सो इट इज न्यूट्रल, राइट? आपकी परचेजिंग पावर यहाँ पे नहीं बढ़ती है. पर जब आपकी इनकम 10% से इंक्रीज हो रही है और इन्फ्लेशन इकोनॉमी में 5% है, तो यस, रियल मायने में आपकी इनकम इंक्रीज हुई, आपकी परचेजिंग पावर इंप्रूव हो रही है. तो हम चाहते हैं एक नॉमिनल की जगह एक रियल इंक्रीज हो आपके इनकम लेवल में. Next, we talk about the policies for economic development. Now, when we talk about the policies, we talk about what are the steps that we can take so as to ensure that we are progressing, we are developing, right? So there are multiple ways that the government can ensure, we as a citizen can ensure that how we can go onto the path of economic development. First, macroeconomic stability, right? Fiscal level पे काफी सारे जो ब्रॉड पैरामीटर्स हैं जिसमें हम कंट्री की हेल्थ को गॉज करते हैं, अगर हम मैक्रो लेवल पे उनको स्टेबल रख पा रहे हैं, उन इंडिकेटर्स को स्टेबल रख पा रहे हैं, देन यस, वी कैन हेड टुवर्ड्स द पाथ ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. वी आर एबल टू रिसीव सब्सटैंशियल फॉरेन एड. हमें एडिक्वेट फॉरेन एड मिल रहा है कंट्री से, विच इंश्योर्स कि हम उन फंड्स को चैनलाइज करें टुवर्ड्स infrastructure, towards education, towards healthcare system, right? So when we are able to secure foreign aid, loans, adequate loans, which allows us to channelize them into the process of development. Then development of manufacturing sector, which is very important. हम usually China को India से compare करते हैं. So where is, what is the area which pips China up? China की economy is based upon manufacturing. It is the hub of the manufacturing sector of the world. So we need to develop in a way that we uplift our manufacturing sector. Production को improve करना भी उतना ही important है. Investment in public services, ऐसी public services को improve करना, इन public services को create करना जो लोगों को satisfy करे, जो लोग चाहते हैं उनके लिए बने. And finally, the last two talks about efficient tax collection and sufficient deregulation in the economy, right? Tax collection should be robust. The economy, the government should get adequate so that they are able to formulate the policies which, caters to the adequate infrastructure, adequate expenditure to be made into the different sectors of the economy. And finally, we talk about deregulation, right? Sufficient freedom to be given to the sectors, right? Red tapeism ko khatam karna, right? If we are able to ensure improvement in all these parameters, then we can say that yes, that is where a country can go ahead with the process of economic development.
And finally, the last slide talks about India and development. हमारा किस तरीके का relationship है development से? So देखा जाए तो rankings में India is definitely improving. काफी सारी rankings हैं जहां हम improve कर रहे हैं. But there are some of the rankings, HDI, other rankings जहाँ पे एक grim picture है, जहाँ पे एक stagnant growth है इंडिया की, जहाँ पे we need to catch up soon, right? And that is where we need to realize कि इन aspects पे काम करना कितना important है, not just limiting ourselves to growth, but expanding ourselves, right? Of course, the COVID-19 cannot, we cannot talk about economics as a whole because now things have changed. COVID-19 has exacerbated the existing problems that continues to haunt our economy. But one positive thing that we can take from the crisis is that we talk about resilient economy. अब हम एक ऐसी economy के बारे में बनाना है, एक ऐसी economy होनी चाहिए जो shocks को absorb करे, right? So when we talk about resilient economy, it is only going to be possible when we are able to achieve the path of economic development, right? So we can do that by improving and improving our focus and trying to widen the horizon when we talk about the whole concept of economic development. Right. So this is it. I believe that you are able to understand now the process of economic development, can differentiate between economic development and other concepts. And please don't forget to provide me a feedback on the email ID. Thank you so much.